Hi friends, good evening guys. So myself CV Lokesh. So guys, am I audible? Am I audible guys? Let me know. Hi Amulyam. Yes, I am audible. Okay, good. Voice and video is clear. Okay, चलो. So I think कल हमने क्या डिस्कस किया था? I think we were discussing relating to the MCQs, right? I hope the material is clear. It's not blur, I guess. कुछ blur है क्या? Let me check. I have opened another file also. Hi Arshita, good evening. Is it still blur? Let me know guys, is it still blur? Okay, I think some technical issue, I guess. Hi Rajesh. So are you able to see it guys? आप देख सकते हैं क्या? I'm again zooming it actually. I think one of the class we had the same problem, I guess. Okay, चलो no worries then. तो हम क्या करेंगे? Okay, तो चलो, so what we will do instead of this, because वो blur दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, we will directly go for discussion on the standards, है ना? तो हम वो discussion शुरू कर देंगे फिर. I hope it should be visible now. Some technical issues might be there, I guess.
ओके, तो what I have written, क्या वो visible है? If I zoom it also, I think will it be visible? Somewhat better than that. Okay, Amulya. Chalo, at least we will take up a standard then. Okay, okay, chalo. See, because I think some technical issues might be there, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा, because last time also we had the same issue, right? चलो, no problem then. Okay, चलो. See, now let's understand here, guys. Now essay 220 क्या discuss करता है, what it talks about. So first let me explain, then I will dictate also, you can make a note of it, don't worry regarding it. Okay, so whatever I write, मैं चाहे तो dictate भी कर दूंगा, or if it is visible to you, you can copy it down, absolutely no issues. ठीक है, चलो. essay 220 talks about quality control in an audit of financial statements. Quality control in an audit of financial statements. Okay, now क्या है sir, what exactly we are discussing now? See, understand the situation. हम discuss कर रहे हैं with respect to quality control. Okay, so we are discussing with respect to quality control. मतलब in short we are focusing on what? We are focusing on quality. Okay, हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं सर? We are focusing on the quality. Quality means what? Now that is what the whole question. Okay, quality मतलब क्या है? Okay, so that is what the whole question, guys. Now the situation is something like this. Quality means I can say okay, the quality means what? I can say ultimately the output. यस और नो? यस. मतलब यहाँ पे क्वालिटी मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्वालिटी मतलब issuing the proper, or I can say issuing the audit report appropriately. Issuing the audit report appropriately. So this is what is nothing but quality. Quality मतलब nothing but issuing the audit report appropriately. Audit report अगर हम correct दे रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे quality. Okay, as simple as is. Not only this, यहाँ पे essay 220A भी discuss कर रहा है कि boss, as an auditor, you have to comply with certain quality control, you can say, or quality control principles. You can say quality control principles. Okay, तो issuing audit report appropriately ये एक हो गया, and complying with quality control principles, this is another aspect. I hope it's clear. So issuing the audit report appropriately and auditor should comply with certain quality control principles. ये दो चीज़ें, all these two things actually has to be taken care. I hope it's clear. Okay, so this is very important for you guys. Now the question arises, ठीक है sir, but what are those quality control principles? क्या principles है sir? That is what we have to know. Okay, that is what we are going to take it up. So meanwhile what you can do, guys, I think first you can make a note of this. Okay, I will zoom it also so it will be visible to you.
Okay, so first you can make a note of this. Guys, once you write then you can tell me. Okay, उसके बाद हम will go for the next aspect. Okay, so make a note of this, guys. See, I am reading it for you. Quality matlab issuing the audit report appropriately, and then auditor should comply with certain quality control principles. Auditor has to comply with certain quality control principles. Okay, so both of it is nothing but ensuring quality. See, you may be thinking, what about MCQs? Don't worry, guys, I think we will take it up tomorrow also, and some MCQs we will discuss now also. I will write it, then you can discuss that also. Okay, yeah, Rajesh. See, I think there may be some, I hope it's visible, right? Okay, Amulya, good. So let's wait for others also. See, quality matlab issuing the audit report appropriately, then auditor should comply with certain quality control principles as well. Okay, chalo, good. Rajesh done. Okay, Rajesh, good. Chalo. So now let's understand this, guys. Abhi, what is quality control principles? What are the quality control principles we have? What are the quality control principles we have? Okay, so now let's understand that. Now first, basically first I will list it down, guys, फिर मैं एक एक आपसे डिस्कस करूंगा. Okay, the first quality control principle is leadership responsibilities. Leadership responsibility. Second one, ethical requirements. Okay, just I'm making a note, guys. I will explain each and everything. ठीक है? The fourth one, client acceptance or rejection policy.
Okay. Fifth one, assignment of audit team. Sixth one, engagement performance. Seventh one, monitoring. Eighth one, documentation. Okay, see, these are the quality control principles, guys. Okay, so these are the quality control principles. So let's understand this clearly. Okay, so I'm making it very clear. So a quality control principles, a total 8 principles are there. First one, it starts with leadership responsibility, ethical requirements, independence, client acceptance or rejection policy, assignment of audit team, engagement performance, monitoring, and then documentation. Total 8 principles are there. Now let's understand this one by one. Ye kya hai, sir? When we say leadership responsibility, please understand this very clearly. When we say leadership responsibility, now what exactly it is meant by leadership responsibility means what? See, it's something like this, guys. I can say one person should take the leadership role. One person should take the leadership role and has to ensure the quality in audit, and has to ensure the quality in an audit. Okay, as simple as is. तो मतलब क्या है guys यहाँ पे? See, one person should be a leader. मतलब whenever you do the audit, if quality has to come out, okay, अगर आपको qualitative काम करना है तो one person should be a leader. I hope you are getting this. So leadership role is very important. One person should take the leadership role and then he should ensure the audit from the start till the end. Okay, then only quality can be provided. Okay, as simple as is. तो when we say leadership responsibility, इसका मतलब क्या है सर? सिंपल सी बात है, one person should take the leadership role and he should ensure the quality in an audit. Able to understand this aspect, everyone? As simple as is, this is what you have to know. Clear है बात सबको? Okay, so first you can make a note of this, guys. Only the first one I have taken. You can make a note of this. Okay, so guys, you have to note this. Once you make a note of this, then I will go to the next aspect. ठीक है? Okay. तो हैव यू रिटन दिस गाइस? क्या आपने लिखा है क्या? Good, Amulya. Let's wait for others also. See, only write leadership responsibility. बाकी सब चीज़ें जब मैं डिस्कस करूँगा, then after that you can make a note of this. I know it's bit blur, but I think yes, it's manageable, I guess, because some technical issues might be there, guys.
Okay, Harshita, good. Okay, Rajesh, good. Chalo. So now let's understand the ethical requirements. Now ethical requirements here means what? Okay, means what? You may be feeling essay 200 already we have discussed, na sir. Okay. So you may feel ethical requirements matlab already in essay 200 we have discussed, na sir. See, ethical requirements, what ethics we have to follow, that we have discussed in essay 200, guys. Let me make it very clear. But here what we are discussing is when you are doing an audit, whether ethics should be followed or not. Yes, and whose responsibility is to ensure this? It is the responsibility of the leader. I hope you are getting this. So as simple as this. So what you have to take into consideration is when ethics has to be followed, it has to be followed. What are those ethics discussed in essay 200? Lekin ethical requirements in essay 220 is what? Ethical requirements in essay 220 is to ensure that, okay, is to ensure that boss, ethical requirements, the leader has to ensure that while doing the audit everyone is following the ethics. Able to understand this? That is nothing but what? Ethical requirements. I hope you're getting the clarity on this. So this is very important for you to remember this. Okay, so in short basically what is that? Again I am repeating this. So in short basically is what? Ethical requirements is nothing but leader has to ensure that ethics have been followed while doing the audit. ठीक है बात सबको? Everyone is clear with this? Okay, chalo. See what I will do, I will dictate it, guys, because it is a bit a technical issue, I guess. Okay, chalo, I will dictate it. Okay, that will be much better. Is it fine? Okay, chalo. So you can make a note of it. Ethical requirements means the leader, some technical terms also we will understand. Okay, first we'll make a note of it. The leader while doing an audit, the leader while doing an audit has to ensure that whoever is involved has to ensure that whoever is involved in doing the audit, has to comply with ethical requirements. Has to comply with ethical requirements. Full stop. If someone is not following it, so I am dictating it, guys, you can make a note. If someone is not following it, then leader has to ensure that it is followed. Okay, so this is what you have to know, guys. The second aspect is what? Ethical requirements. I hope it's clear to you, everyone. Okay, Rajesh. Chalo, shall we go to the next one? Okay, Amulya, good.
Okay, Archita. See, now let's understand the next aspect, that is independence. Okay, the next one is what? Independence part. Now, see, some students maybe start getting the doubt. Sir, independence is already a part of ethical requirements, na sir? Independence is already a part of ethical requirements, na sir? See, answer is yes, guys. But SA 220 has classified this separately. SA 220 ने क्या किया है, इसको separately classify किया है as a principle which you have to follow. Okay, why? Obviously, it is very important. I hope you already know this. Oh, बहुत important. Independence has to be ensured by the auditor while doing audit. है ना? So as simple as this. Now, the thing is, sir, when it should be ensured, independence has to be ensured. Correct, sir. But sometimes ऐसा भी हो सकता है, there may be some threats to independence. है ना? There may be some threats to independence might be there. Okay, so when there are threats to independence, so whenever there are threats to independence, then in this case what has to happen? तो क्या करना है सर? See, whenever there are threats to independence, leader has to ensure that the threats are removed. Leader को क्या करना? He has to ensure that the threats are removed, and the leader has to ensure the threats are removed and everyone is working independently. Okay, क्या हो सकता है सर threats to independence? See, again we have a concept, guidance note on independence of auditor, but उसको भी अगर हमने बाजू में रख दिया तो भी फिर what happens in code of ethics, professional ethics topic we have that, है ना? So that also you have to take into consideration. So I can say threats to independence जो भी है, it has to be removed by the leader, the person who is responsible for the audit. See, कोई भी responsibility लिया है उसको तो fulfill करना ही पड़ेगा. As simple as this. So threats to independence है, तो मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, threats to independence है, तो in this particular situation what you have to do, whenever there are threats to independence, leader has to ensure it is removed and everyone is working properly. Able to understand this? Okay, this is what you have to know. Chalo, now I will dictate the point for this. Okay, you can make a note of this. I will dictate it, you can make a note of it. You can give the heading independence. You can give the heading independence. Now write down, guys, the leader has to ensure, the leader has to ensure the leader has to ensure that the leader has to ensure that the entire audit team is working independently, through mind and also through appearance, through mind and also through appearance. See, through appearance means what? Professionalism. Okay, so as simple as that. Full stop. If there are any threats, to independence, then the leader has to ensure that the threats are removed, and everyone is working independently. The threats are removed and everyone is working independently.
and everyone is working independently. Okay, so this is what you have to know. Okay guys, let me also tell you, यहाँ पे see certain words हमें याद रखना है. Some terms have been changed. मतलब essay 220 gives some different aspect. जैसे for example, if normally what happens, auditor, we call the word auditor, लेकिन यहाँ पे so leader we are using, actually the terminology should be, it should be engagement partner. ये टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा. ICA sometimes uses this and this is technically right. Okay, auditor मतलब engagement partner. Then audit मतलब engagement assignment. Audit मतलब engagement assignment. Okay, audit team is nothing but engagement team. Audit team is nothing but engagement team. So these words you have to remember guys. Okay, इसको याद रखना ही पड़ेगा. There is no other option. Auditor मतलब engagement partner, audit मतलब engagement assignment, audit team मतलब engagement team. सिंपल सी बात है. ओके सी जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज दैट इज एक्चुअली द वर्ड्स विच हैज़ बीन यूज्ड बाय essay 220. ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखो, ये वर्ड्स essay 220 ने यूज़ किया है. आई होप इट्स क्लियर. ओके, ये वर्ड्स को हमें याद रखना है. आई होप आपने लिखा है. आई होप एवरीवन हैज़ रिटन. If yes, let me know guys so that I can move to the next point. Harshita says yes. Okay Harshita. Okay Rajesh. I think there are 2 more people online I guess. Okay Amulya, 1 more person. Have you written that? Anyways, chalo. See now after this, see यहाँ पे one important thing I can say before I move to the next aspect. Okay, so let me basically discuss a small MCQ guys. Okay, यहाँ पे important रहेगा. ओके, तो स्मॉल MCQ आई वांटेड टू डिस्कस. ठीक है, सी देखो अभी क्वेश्चन को देखो. फर्स्ट आई विल राइट, देन यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट. ठीक है,
ओके सो गाइस ये सिंपल सा MCQ है राइट, लेकिन ट्रिकी हो सकता है। ओके तो फर्स्ट आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। सो once if you note, then उसके बाद I can expect an answer from you। तो पहले आप लिख लीजिए। तो after you write, you can give the answer guys। Amulya says option B, Rajesh says B sir, okay। तो are you sure guys? Harshita says B। Are you sure about it everyone? Harshita says yes, okay Harshita, good। Rajesh also says yes sir। Amulya also says yes sir, okay chalo। See it's something like this, answer is absolutely right guys। So option B is the right answer। Why? See यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखो। While doing an audit of financial statements, auditor has to comply with the quality only at the end of the audit बोल रहा है। What he is telling, only at the end of the audit, मतलब क्या क्वालिटी हमें ओनली एंड पे चेक करना है, या whenever we do the audit from basically beginning onwards we have to ensure quality। beginning onwards we have to ensure the quality। I hope बात क्लियर है। स्टार्ट से एंड तक तो क्वालिटी मेंटेन ही करना है। सी आई टोल्ड द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इज अल्टीमेटली टू गिव ऑडिट रिपोर्ट, वो अल्टीमेट आउटपुट है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। क्वालिटी तो हर जगह पे हमें मेंटेन करना है, क्वालिटी तो हर जगह पे हमें चेक करना है। वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी, ऑडिटर को क्वालिटी इंश्योर करना ही है। लेकिन हाँ अल्टीमेटली मैंने जो भी क्वालिटी बेसिकली मैंने इम्प्लीमेंट किया है, क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स हो, मेरा पॉलिसीज हो, उन सब कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है अल्टीमेटली? इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑडिट रिपोर्ट। I hope you are clear with this particular concept guys। So this is very important what you should know। okay MCQ देखने के बाद ऐसा लग सकता है ऑप्शन A is the right answer या ऑप्शन C basically is the right answer, ऑप्शन D तो आएगा नहीं, that's a different story। ऑप्शन A या C is the right answer लग सकता है। No guys, please make this point very clear। ठीक है बात सबको? Everyone clear with this part? So shall I go for the next explanation guys? Okay Amulya, okay चलो okay chalo guys, so now let's move on to the sorry, let's move on to the next one, that is nothing but client acceptance या rejection policy। see ये principle जो है ना, it gets linked with the essay 210 which we have discussed earlier। ओके सी क्लाइंट एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पॉलिसी मतलब क्या है सर? सी यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्लाइंट को क्या एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। वेदर वी शुड एक्सेप्ट द क्लाइंट और वी शुड रिजेक्ट द क्लाइंट।
ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है सर, व्हाट वी हैव टू कंसिडर। सी ऑडिटर को क्या सोचना है यहाँ पे, सिंपल थिंग है, ऑडिटर हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन, okay, like whenever he does an audit, whenever he wants to do an audit, whether the client is willing to provide all information to him whichever is required in an audit, whether the client is ready to provide additional information whenever he gets the doubt, okay. And the third one you have to take into consideration as an auditor, आप लोगों को ये भी चेक करना है कि कभी भी आपको किसी को इंक्वायरी करना है तो क्या क्लाइंट इस चीज को अलो करेगा क्या, okay. All these things, if you remember yesterday I told this, sorry, matlab in one of the classes previously I told this, it's a precondition for an audit, है ना। तो ये preconditions for an audit existence में रहना important है। if it is in existence then automatically what will happen, if it's in existence then you can accept the client, okay. अगर precondition ही नहीं है तो ऐसे 210 also has said very clearly do not accept the client, okay. क्यों, आप accept करोगे वो restrictions डालेगा आपके ऊपर, and आप काम कैसे करोगे, अगर आप काम proper नहीं कर पा रहे तो automatically quality will also get affected। आई होप बात समझ में आ रही है आपको। तो इट्स एज सिंपल एज इज, सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट बॉस, यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट वेन एवर क्लाइंट हैज टू बी एक्सेप्टेड, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यू शुड एंश्योर दैट boss whether he is willing to provide all information, whether he is willing to provide additional information, whether he is willing to give unrestricted access to persons in the entity। अगर ऐसा है तो you can accept the client। Now some students will automatically get a doubt क्या है sir, at the initial stage client was behaving like that he is a very good person, ओके। क्लाइंट हमेशा ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो हर पर्टिकुलर कोऑपरेशन देने के लिए तैयार है, वो चाहे इंफॉर्मेशन हो, एक्सेस टू पर्सन्स हो, किसी को इंक्वायरी करना हो, एनीथिंग बेसिकली ही वाज विलिंग टू प्रोवाइड, ऐसा दिख रहा था। लेकिन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, आफ्टर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट सॉरी, आफ्टर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट, अभी क्वेश्चन ये आएगा कि नाउ ही इज नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन फॉर ऑडिटर, ओके। अब क्या करना है सर, दैट्स द रीजन यहाँ पे उन्होंने वर्ड को यूज किया है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ओके। इसको हम और एक वर्ड भी बोलेंगे कंटिन्यूएशन, क्लाइंट एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएशन पॉलिसी भी बोल सकते हैं, ओके। तो आप क्लाइंट को, आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्लाइंट को एक्सेप्ट करो या कंटिन्यू करो वो आपके ऊपर है। क्यों सर, अल्टीमेटली इफ यू आर ट्राइंग टू गिव क्वालिटी यू शुड सेलेक्ट a correct client, able to understand। See otherwise for example you choose as basically a wrong person, so don't you think your audit, your career, almost everything will be into trouble or not? Yes, that is very important। तो client को accept करना है या नहीं करना है, that is your particular thing, able to understand। ये auditor को check करके ही decision लेना है उसे। I hope बात clear है यहाँ पे, okay। चलो गुड। सी नाउ बेसिकली असाइनमेंट ऑफ ऑडिट टीम, असाइनमेंट ऑफ ऑडिट टीम मतलब क्या है गाइज, इट इज नथिंग बट आई कैन से सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम, इट इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम मतलब, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम मतलब क्या है यहाँ पे, सी एज एन ऑडिटर यू शुड बी हैविंग एन ऑप्शन टू सेलेक्ट योर टीम मेंबर्स। मैं एग्जाम्पल एक लेके बताता हूँ मैं आपको। सी कभी कभी कैसा होता है कि लेटर से एक एक्स लिमिटेड क्लाइंट है जो ऑडिट आया है एक फर्म को एबीसी एंड एसोसिएट्स में, ठीक है, एबीसी एंड एसोसिएट्स में ऑडिट आया है। नाउ एबीसी में 3 पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली नाम के हिसाब से तो हम बोल सकते हैं ए बी एंड सी, एंड इसमें 10 आर्टिकल असिस्टेंट्स है, ओके। इस 10 आर्टिकल असिस्टेंट्स है, ओके, 3 पार्टनर्स है, एक फर्म का डाटा है। लेट अस से अब एक्स लिमिटेड ऑडिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है मिस्टर ए, ये हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को हम क्या बोल रहे थे, वी वर टेलिंग लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, यही तो हम बोल रहे थे, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अब क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल।
ए को हमने बोला, मतलब ए ने बोला है कि एक्स लिमिटेड का ऑडिट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो अदर पीपल शुड वरी अबाउट इट। हो गया बात। अभी क्वेश्चन ये है कि 10 आर्टिकल्स में लेट अस से 9 आर्टिकल्स को ऑलरेडी हायर, मतलब ऑलरेडी वर्क पे लगाया है मिस्टर बी एंड सी, एंड एक ही आर्टिकल बचा है, एंड एक ही आर्टिकल बचा है जो काम करने के लिए। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बात समझ लीजिए। दिस पर्सन, दिस वन आर्टिकल, उसको कंपनी के ऊपर कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, एक्स लिमिटेड इज ए कंपनी, कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, लेकिन इस बंदे को ही इज हैविंग ओनली नॉलेज ऑफ टैक्स ऑडिट। ओके, ओनली टैक्स ऑडिट। अभी ये क्या बोल रहा है भाई, बी को बोल रहा है ओके, अरे यू स्वैप विथ एनी अदर आर्टिकल। ओके, तो जो भी कंपनी ऑडिट के ऊपर, स्टैट ऑडिट के ऊपर नॉलेज है जिसको, उसको मेरे को भेजो। ओके, देन ओनली व्हाट हैपेंस गाइस, ये विल एंश्योर क्वालिटी व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड। आई होप बात क्लियर है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे अथॉरिटी, ऐसे चांस ही नहीं है बेसिकली मिस्टर ए को, then tell me guys, how can he ensure the quality? Can he ensure the quality? He cannot ensure the quality. I hope you're getting this. So selection of audit team is also the responsibility of whom? Selection of audit team is also the responsibility of the leader. Okay, उसको अथॉरिटी होना चाहिए भाई, ये मेरे को सेलेक्ट करना है, देन ओनली आई कैन एंश्योर द क्वालिटी। इफ यू गिव अ रॉन्ग पर्सन, if you give a wrong person, then as a leader you will fail only. I hope you basically understand this. So जैसे क्रिकेट में हमेशा बोलता है, a good captain should also have a good team, then only you can win the cup. Okay, see same type like here also a leader should also have the proper article assistant, or I can say article नहीं बोल सकते, team member बोल सकते। I hope बात clear है इस बात को। Okay, चलो, so this is just an example guys, again no need to write because of text, because of some technical issues I think it is coming as blur। ठीक है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा वो, नॉट टू वरी रिगार्डिंग इट। ओके, चलो एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखो, दैट विल बी मोर देन एनफ। क्लियर है बात सबको? ओके, चलो ओके, चलिए गाइस, ओके, सो नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ओके, अभी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट परफॉर्मेंस? सी इट्स समथिंग लाइक, ऑलरेडी मैंने बोला यहाँ पे एंगेजमेंट मतलब ऑडिट परफॉर्मेंस। तो ऑडिट परफॉर्मेंस कब अच्छा रहेगा? when will the audit performance be good? Okay, now for this they specify some factors guys। उन्होंने क्या बोला है, कुछ फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेने के लिए उन्होंने बोला है ना, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सम सिंपल पॉइंट्स है, नो नीड टू राइट, जस्ट आप बेसिकली सुन लो, काफ़ी है। डायरेक्शन, supervision and performance, direction, supervision and performance। okay, second one, so just I'm writing it down guys, you don't have to write, सुन लिए तो काफ़ी है ये। then reviews, consultation, engagement, quality control, reviewer,
differences of opinion. Okay, so I can say, so these are the 5 points. ये 5 points जो है it talks about the engagement performance. मतलब engagement performance मतलब क्या है guys? See, it's something like this: direction, supervision and performance. ये सिंपल सी बात है, अगर ऑडिट में परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए तो डोंट यू थिंक गाइस एज एन ऑडिटर, एज ए लीडर, आप अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा कि नहीं? यस, यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू गिव द डायरेक्शन. आपको उस पर वर्क को सुपरवाइज करना पड़ेगा, तभी तो उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. I hope you're understanding this. So point number 1, direction, supervision and performance. Okay. Second thing, review. Review मतलब यहाँ पे क्या है सर? It's something like this guys. So यहाँ पे क्या है? Review मतलब review of audit evidences. जो भी evidences है, right? जो भी evidences है उसको review तो करना पड़ेगा. I hope you're getting the clarity on this. क्योंकि क्या है, see ultimately just by last evidence you cannot come to a conclusion. मतलब आप last में जो आपको evidence मिला उसी हिसाब से क्या हम रिपोर्ट दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. जो भी आपने evidences gather किया, it may be internal evidences, it may be external evidences, it may be written evidences, oral evidences, visual evidences. Okay, so all those evidences वो persuasive हो सकता है, conclusive हो सकता है. जो भी evidence कहीं से भी आपने gather किया है तो उन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा आपको? ओके, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट एक बार रिव्यू करके तो अपने ओपिनियन दो. ओके, विदाउट रिव्यूइंग यू शुड नॉट गिव द ओपिनियन. ओके, तभी तो क्वालिटी का आएगा. मतलब आई कैन से देन ओनली द क्वालिटी कैन बी गिवन टू द क्लाइंट, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव द क्वालिटी. ओके, एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन, कंसल्टेशन. कंसल्टेशन मतलब क्या है यहाँ पे? Consultation is nothing but boss, whenever expert opinion is required, whether we should go for the expert opinion, absolutely yes. Consultation यहाँ पे क्या है? expert opinion है. तो कभी भी आपको लगता है कि expert opinion के पास जाना है, yes obviously you can go for them. I hope आपको clarity मिल रहा है. तो expert opinion definitely you can have it. ओके, सो जो भी है एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो हम ऑडिट में क्वालिटी भी बढ़ सकता है. ओके, एंड द फोर्थ वन, वो क्या बोल रहा है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. मतलब ये क्या है सर? सी इट्स समथिंग लाइक दिस. ये मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंटिटीज को. सो दिस इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड एंटिटीज को मैंडेटरी है. तो मतलब क्या है यहाँ पे? सी आई कैन से समथिंग लाइक दिस. व्हेनेवर यू डू द ऑडिट अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी को आपको प्रोवाइड करना है. लेकिन हाँ, हमेशा ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि जो भी वो कर रहा है कि वो सही कर रहा है. बट रिमेंबर गाइज, व्हेन यू अपॉइंट समबडी, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. दैट पर्सन विल रिव्यू योर वर्क एंड देन ही विल गिव द पर्टिकुलर ओपिनियन. ओके, उस ओपिनियन के हिसाब से चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? Ultimately you can modify your conclusions and then you can go for the reporting. This is something like evaluating ourselves. हम खुद को evaluate कर रहे हैं. बात क्लियर है सबको? ओके, चलो. एंड देन द लास्ट वन क्या है? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. ओके, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्या है? सी यहाँ पे सिंपल सी बात है. यहाँ पे देर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, दैट इज ऑडिटर. ओके, यहाँ पे एंगेजमेंट टीम का भी इन्वॉल्वमेंट है ऑडिट में. एंड अल्टीमेटली यहाँ पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का भी इन्वॉल्वमेंट है. तो डोंट यू थिंक गाइस इन तीनों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकता है कि नहीं? एब्सोल्युटली यस. अरे बॉस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है. सो व्हेनेवर देयर इज ए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेनेवर देयर इज ए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, एज सिंपल एज इज, अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, व्हेनेवर देयर इज ए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, देन इन दिस केस whose particular opinion will prevail. अगर रिव्यूअर ने कुछ बोला है, ऑडिटर कुछ और बोल रहा है, तो किसका ओपिनियन अल्टीमेटली प्रिवेल होगा? इट इज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. इट इज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही रहेगा. क्यों सर? सिंपल सी बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है ऑडिट का? इट इज अल्टीमेटली द ऑडिटर, एंगेजमेंट पार्टनर. दैट्स व्हाई हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली विल प्रिवेल. ओके, तो अल्टीमेटली क्या? सी इट्स समथिंग लाइक दिस. आपको याद रखना पड़ेगा, रिव्यूअर इज समथिंग लाइक गिविंग सजेशन.
ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, वो सजेशन दे रहा है एज एन ऑडिटर, नाउ यू हैव टू डिसाइड। आई होप बात क्लियर है इन सब चीज़ों का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस विच यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। ओके, सो ये सब चीज़ें क्या है, ऑल दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू engagement performance. Okay, so that was our particular point, right? Engagement performance. Clear है बात सबको? चलो, now the next two things actually क्या है सर, वो monitoring and documentation. Monitoring मतलब सी सिंपल सी बात है, whatever the work you have assigned to your team, don't you think as a leader you should monitor them or not? Absolutely yes. तो आपको monitor करना पड़ेगा, you have to monitor them. Okay, like you if you monitor, आपको ये भी मालूम पड़ेगा कहाँ पे और टाइम लगने वाला है, where the extra time is going to get applied. Okay, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Monitoring is very important aspect whereby you can see what your team members are doing. Okay, you can ensure, like for example, some, let us say, efficient team, actually they have completed the work much early, you can assign them other works. Able to understand monitoring से क्या होता है, आपको मालूम पड़ जाएगा where exactly you stand. Able to understand this, so that is very important which you have to know. And the last thing they specify, documentation. Documentation, now what is documentation? Simple सी बात है, see understand here, engagement partner मतलब auditor. Okay, whatever he does, whether he should document it or not, yes, उसको document करना पड़ेगा. Okay, same way engagement quality control reviewer. Engagement quality control reviewer, whatever he has done the work, don't you think he should document it or not? Absolutely yes. I hope you are getting the clarity on this. So very important that basically boss, जो भी कुछ भी काम किया है, like auditor ने काम किया है उसको डॉक्यूमेंट करना है, सर रिव्यूअर ने काम किया है उसको भी डॉक्यूमेंट करना है. वाई, सी अल्टीमेटली टुमारो एज एन ऑडिटर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने बोला व्हाट ऑडिट यू हैव डन, क्या काम किया है तूने, ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन शो दिस और नॉट, दैट इज नथिंग बट अल्टीमेटली वर्किंग पेपर्स. Documentation is nothing but what, your working papers only. You can show that, that is the proof. I hope you're getting this. And ultimately if somebody asks a reviewer, अरे भाई तुम बोलो क्या काम किया है तूने, okay, then he can show the documentation, that is his proof. Able to understand? So it's very important for you to remember that whatever the work whoever has done, it may be auditor, that is technically we call him as engagement partner, या फिर reviewer, ओके, द पर्सन हु रिव्यूज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर, ओके, रिव्यूअर हो सकता है, इन दोनों में कोई भी काम किया है, सो दे हैव टू डॉक्यूमेंट इट. वंस यू डॉक्यूमेंट, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. बात क्लियर है सबको? सो ऑल दिस इज विद रिस्पेक्ट टू SA 220, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आई होप इट्स क्लियर गाइस एवरीवन. Any doubts if you have you can ask. Don't worry guys, MCQs हम कल देख लेंगे. Tomorrow we are going to discuss those MCQs. ठीक है? If any queries are there, let me know. Okay, Amelia. Okay, okay. चलो. So read well then. ठीक है? So tomorrow we'll meet up at same time, 6 PM. Okay? Thank you guys. Chalo, take care. Yeah, bye Rajesh. Yeah, bye. Okay Harshita. Yeah, bye.